चलो अभी तेरा वीडियो सही। बंद कर रही हूँ मैं। नहीं नहीं, अभी आ रहा है तेरा, अभी बराबर आ रहा है। चलो चालू करते हैं। यूयूएल कंपनी। यूएल कंपनी। पहले पूछा क्या, पहले वो देख लेते हैं। कैलकुलेट इक्विवेलेंट एनुअल ग्रोथ इन डीपीएस, ईपीएस एंड शेयर प्राइस। क्या हाँ, क्रिटिकल कमेंट ऑन व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द चेयरपर्सन। UUL Company is a public water supply company which has privatized a number of years ago. As a deputy finance director, you are reviewing the draft financial statements with which contain the following statements by a chairperson. This company has delivered above average performance in fulfillment of our objective of maximizing shareholder wealth. Earnings, dividends, and share price have all shown good growth. It is our intention to continue to deliver strong performance in the future. ओके। आ गया DPS. You have obtained the following information regarding the water industry for the last 5 years. Dividend growth is 11%. Earnings growth is 12%, and share price growth is 18%. General inflation in the economy has averaged 2% per year. Number of shares in issue has remained unchanged over the last 5 years, and the price upon earnings ratio are calculated using year-end share prices. Calculate the equivalent annual growth in dividends per share. तो अपने को DPS 12 का दिया, तो अपने को 13 का निकालना है। देन ऐसा करते रहना है, ऐसा बोला है क्या? 12 का दिया, 12 का किधर दिया है? 12 और 16 का दिया है ना, ईयर्स। अच्छा, 12 16 का दिया। ओके ओके ओके। बस ग्रोथ का फॉर्मूला लगाते हैं। ग्रोथ इज इक्वल टू आई गेस। नहीं, हम 4 इयर्स ले गए, 5 इयर्स नहीं। हम्म, 12 से 13, 13 से 14, 16 से 15, 15 से 14, 14 से 13, 13 से 12। हाँ, 4 years आएगा। So n is 4 years. Dividend n number of years ago is 4.2.1. ओके। 6.9। पावर इज इट? ओके। उल्टा डाल दिया मैंने, कॉमा 1/4। 14.03% आता है मेरा एनुअल ग्रोथ। तो ये जो उन्होंने मुझे दिया है, यू हैव ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वाटर इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 5 years, की मतलब एवरेज वाटर इंडस्ट्री का कितना है वो उन्होंने हमें नीचे दिया है, और अभी हमारा कितना है बस हमें वो उनको बताना है। ईपीएस
तेरा करंट DPS 14.03 आया ना। हाँ 14.03, यस। मेरा करंट ईयर का है 41.3, 31.6, चल गया 22 17 प्राइस अर्निंग्स रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो ऐसे कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, बट अभी ऐसे ही निकल रहा है तो क्यों ना ट्राई करें। रेशियो ऐसे ही क्यों निकाल रहे हैं हम? प्राइस अर्निंग रेशियो को बेटर तरीके से निकाल सकते हैं ना। हाँ वो फॉर्मूला है ना। हम्म। बट तू ग्रोथ निकाल रही है ना, तू भी हाँ ग्रोथ ही निकालना है। हाँ ना। हाँ हाँ, तीनों का ग्रोथ निकालने का है हमें। वही। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अपने को इक्विवेलेंट एनुअल ग्रोथ बराबर आया है कि नहीं सबका। देन विल गो अहेड। देखो आ गया इसका थर्ड वाले का शेयर प्राइस का। हाँ, मतलब प्राइस ओके। अर्निंग्स का रेशियो का 6.1, सॉरी 6.6। तो पहले वाले का आता है 14 फॉर डिविडेंड। इक्विवेलेंट एनुअल ग्रोथ का 6.9। हमने तो बोला ना, ये इसका ऐसे नहीं निकालना है अपने को, प्राइस रेशियो का। प्राइस रेशियो का ऐसे मेरे नहीं को निकल। 14 आया, वही है क्या प्राइस अर्निंग इसका भी? हाँ 14, 14.1। नाइस। 14.04 आया पर मुझे। हाँ ठीक है, उतना क्लोज तो चलता है। मुझे शेयर प्राइस का चाहिए। अगर मेरे मेरे को को शेयर समझ गया। चाहिए। शेयर प्राइस दिया है तो कैसे करने का? शेयर हाँ प्राइस हमेशा एमपीएस समझ के चलने का। रुक जा, अभी मेरे को करने दे। शेयर प्राइस बोला था ना, तो शेयर प्राइस के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया था ईपीएस। और नंबर ऑफ शेयर्स हमें यहाँ पे दिए गए थे क्या? नहीं। हमें, हाँ ओके, लेकिन हमें पीई रेशियो का दिया गया था। तो फॉर दैट पीई रेशियो इज इक्वल टू शेयर प्राइस, नहीं अर्निंग्स अपॉन शेयर प्राइस था ना। हाँ, अर्निंग्स अपॉन शेयर प्राइस था। एमपीएस अपॉन ईपीएस, तो ईपीएस इंटू पी रेशियो रहेगा। तुझे वैसे ही आया क्या? हाँ मैंने वो किया। शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस, एमपीएस अपॉन ईपीएस, so therefore price is equal to 41.3 into 22। तो शेयर प्राइस इज 9.86 एंड ये, तो अब मैं जब ये करूंगा ना तो मुझे करंट ईयर, यस ईयर, करंट ईयर का ये, यस ईयर का है ये। सो आंसर इज 14.04%। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। 1.04 आया। ऐसे ही किया अभी, 0.25 को उन्होंने लिया, मतलब हाँ रेस टू 1/4 ही लिया, ठीक है। अभी इसमें से अभी अब अपने को क्या है, अपने खुद के व्यूज भी देने हैं ना। तो व्यू हम्म। तो यही दे सकते हैं कि देखो डिविडेंड ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, कि मतलब अब वी आर कीपिंग द शेयर होल्डर्स मोर देन हैप्पी, बिकॉज द एवरेज इंडस्ट्री डिविडेंड ग्रोथ इज ऑफ 11% एंड आवर डिविडेंड ग्रोथ इज ऑफ 14%। और 14%।
The earnings per share has gone down because the industry average is 12%. However, ours is half the percent. Yeah, 6.92% आया है अपने को ना. 6.9%. Which शेयर means प्राइस भी हाँ. And last में share price has is lesser than the industry average. However, it has not been significantly affected as per like the EPS. ये एक है. पर पढ़ लेते हैं उन्होंने क्या बोला है. The chairperson states that the company has delivered above average performance. However, while its dividend growth has exceeded the water industry average, the growth in earnings and the growth in share price is significantly behind the water industry average. Hence, it is hard to justify the statement made by the chairperson. Indeed, the shareholders should be concerned that given the growth in earnings, the current dividend growth rate does not seem to be suitable. Indeed, सस्टेनेबल shareholders should be concerned that given the growth in एक मिनट given the growth in earnings, the current dividend growth rate does not seem sustainable. मतलब कि बस हमारा ईपीएस कम बढ़ा है लेकिन हमारा डिविडेंड ज्यादा बढ़ गया तो हम डिविडेंड ज्यादा दे ज़्यादा बढ़ा है ऐसा. हाँ तो what they are trying to say तो is कि डिविडेंड थोड़ा कम देना चाहिए या डिविडेंड को रिड्यूस करने की जरूरत है. क्योंकि प्राइस अर्निंग भी और कम है ना और डिविडेंड ही सबसे ज़्यादा दिया है राइट. So on the positive side, given the inflation rate during the period, the company has delivered real growth in earnings, dividends, and share price. Additionally, the PE ratio has growth, which indicates the market is increasing confident about the future of the company. ठीक है. कितने मार्क्स का था? 8 मार्क्स के लिए था. Not bad. Next, other than shareholders and directors, identify three other key stakeholders in the company, such as your company. Identify what financial and other objectives the company should aim to follow in order to justify each of these stakeholders. Shareholders and directors को छोड़ कर ना एक है. थ्री अदर की स्टेक होल्डर्स हाँ. सो अभी ये वाटर इंडस्ट्री है. एक हो सकता है गवर्नमेंट, हाँ लोकल अथॉरिटी, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज. कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज थ्री अदर की स्टेक होल्डर्स एक में कोई मिस कर रहा हूँ. ट्रस्टी नहीं मैं एक कोई मिस कर रहा हूँ. कस्टमर्स गवर्नमेंट हो गया सप्लायर्स दे सकते हैं क्या मे बी. हम्म. रुक ना अभी इन्होंने एक और चीज बोली है. आइडेंटिफाई व्हाट फाइनेंशियल एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स द कंपनी शुड एम टू फॉलो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ईच ऑफ द स्टेक होल्डर. कस्टमर्स के लिए द फाइनेंशियल objective is to give the best quality products at the best suitable price for them. Financial objective नहीं actually ये financial objective is to give them at the best price and other objective is to give them the best quality of the products. गवर्नमेंट के लिए या लोकल अथॉरिटी के लिए वही चल सकता है कि टैक्स रहेगा क्या रहेगा. टैक्सेशन गवर्नमेंट पे हाँ. टैक्सेशन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव द गवर्नमेंट टू पे टैक्स ऑन टाइम ऐसा. हम्म मुझे लगता है एक और रह सकता है कि मेंटेन द स्टैंडर्ड्स दैट आर बीन सेट बाय द गवर्नमेंट एंड नॉट क्रिएट अननेसेसरी पोल्यूशन. हाँ अदर ऑब्जेक्टिव्स में कंसिडर कर सकते हैं फिर लास्ट बचता अभी कौन बचा अभी अपना कस्टमर ना. नहीं कस्टमर हो गया. कस्टमर हो गया एम्प्लॉय. एम्प्लॉय हाँ एम्प्लॉय कर सकते हैं एम्प्लॉय का फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और अदर ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा टू टू रन दी बिजनेस विदाउट एनी माल प्रैक्टिसेस डिस्ट्रेस. हाँ डिस्ट्रेस और माल प्रैक्टिसेस राइट. एक बार पढ़ लें क्या. हाँ पढ़ लो The three other key stakeholders in UL company are the local
community in that area that company operates, the customer of the company and the government. तो इन्होंने employees को नहीं consider किया है. Local community will be interested in financial success of the company and this will potentially generate jobs and wealth in the region. Okay. Equally, they will be keen to ensure that the company adheres the best practice in the treatment of disposal of sewage and the risk of pollution is minimized. Perfect. ये local authority देखती है, community देखती है, ठीक है. Customers of the company will be keen that their cost of water is minimized. Okay, उन्होंने basically ज़्यादा पैराग्राफ टू पैराग्राफ ये रखा है, इसलिए कॉस्ट ऑफ वाटर बोला है, अपन ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बोला था. एट द सेम टाइम दे विल बी कीन टू मेक श्योर दैट दे हैव कांस्टेंट रिलायबल एंड सेफ वाटर सप्लाई. अपन ने बेस्ट क्वालिटी बोला था, ठीक है, मोर और लेस द सेम. ये 13 वाला टैक्स रिसीट्स. द गवर्नमेंट विल बी कीन टू एक्सट्रैक्ट टैक्स रिसीट्स एंड विल बी कीन टू सी द कंपनी सक्सीड सो दैट those tax receipts grow. The government will also want to make sure that all the operations of the company comply with the relevant environmental legislation and that all developments by the company such as development of a new reservoir comply with the planning laws. Okay. More or less the same, right? Or no? Identify what government intervention and other regulation your company may suffer and how this will impact upon the company. By what government intervention in the legislation will make suffer, how will it influence the company? Government will intervene in the regulations of fuel company because they don't want fuel company to take the advantage of the monopoly position. Okay. Uh, Water industry will have less competition because of which there are chances that fuel company may charge exorbitant prices. The government may intervene in order to reduce the order to stabilize the prices so that uh, the customers do not suffer because they don't have any other uh, substitute to go to. और कैसे गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी? इम्पोर्टेंट पॉइंट तो तुमने कवर किया और वो ये था कि इन्वायरमेंट गंदा ना करे, हाँ, so मिनिमाइज दी right, so it maintains all the environmental standards and all that stuff. उसका एक पैराग्राफ खींच लेंगे, ठीक है. intervention. The strategy for monitoring government having application to each other countries and the different. Government will be keen to minimize the impact that the likely monopoly position of fuel company will have on its customers. The monopoly position may itself be tolerated as water industry is a natural monopoly where it would be hard to introduce competition and where economics of scale necessary and where the economics of scale necessary to justify infrastructure investment make a monopoly acceptable. Scale of economics, या मैं हमेशा भूल जाता हूँ क्या रहता है. Scale of economics. कैसे समझाऊं? ठीक है, गूगल Like समझा देगा. scale of economics. Cost advantage. Cost advantage businesses gain when they increase their scale of operation. Okay. कंपनी को कॉस्ट एडवांटेज कैसे होगा एंड कैसे मिनिमल कॉस्टिंग के साथ वो एफिशिएंट बन सकता As the government is very likely to control price increases and limit the return that the company is able to make in order to make sure that your company does not take advantage of its monopoly position. Equally, the government is likely to impose minimum service standards that fuel company must provide to its customers as the customers do not have a choice of provider. The government will also intervene to make sure that fuel company
is carrying out its operations in a way that will not necessarily cause environmental damage. As public company, UL company will suffer all the costs associated with making sure that they have and are seen to have good corporate governance. Okay. Additionally, UL company will suffer interference from the government as water is strategic commodity, and the government will have an obligation to make sure that the country's anticipated needs are forecast and planned for. सही answer.